enjoyment because without purity there cannot be development of love of God. So all those who are accepting initiation in the Krishna conscious movement, they agree to chant minimum 16 rounds a day, and on Ekadasis and other auspicious days to chant more, like 25 rounds, and to follow the opportunity to three birth. The first birth is from the womb of the mother, and this birth is common both to animals and to human beings. The second when you take initiation in this opportunity to obtain four births, and in the female form under the opportunity to obtain three births. The first birth is from the womb of the mother, and this birth is common both to animals and to human beings. The second birth is realized when you accept initiation into the chanting of the Hare Krishna mantra. The third birth is realized when you take initiation into the Gayatri mantra. This is known as the Brahmin initiation. And the fourth birth is realized when you take sannyas. In our Vaishnava Sampradaya, in the male body, you can obtain four births, and in the female form, you can obtain three births. So those who are accepting initiation today, they should please take these vows of initiation very seriously. Please remember that these vows of initiation are going to be taken today in front of the spiritual master, in front of Srila Prabhupada, in front of the deities of God, and in front of all the devotees. So please do not forget these vows later on. The nature of the mature world is that the illusory energy is always trying to cheat us. It is trying to cheat us to understand that sense enjoyment is natural and is a path to happiness. The scriptures and the spiritual master are telling us the opposite. They're telling us to give up sense enjoyment because without purity there cannot be development of love of God. So all those who are accepting initiation in the Krishna conscious movement, they agree to chant minimum 16 rounds a day, and on Ekadasis and other auspicious days to chant more, like 25 rounds, and to follow four regulative principles. The four regulative principles that we follow are no illicit sex, no intoxication, no meat, fish, and eggs, and no gambling. And the fifth principle is to control the mind. Now, we not only have to chant the Hare Krishna mantra 16 rounds, but we should make an endeavor that we chant good quality round. Therefore, in the Vedic scriptures, it is recommended that in chanting the holy name
10 offenses should be avoided. In the Chaitanya Charitamrita, it is explained that there are three different stages of chanting the holy names of Krishna. The first stage is when you chant and commit offenses at the same time. The second is when you make an attempt to minimize the offenses. And the third is when you chant without any offenses at all. So those who are accepting initiation today, they must make an attempt to avoid the offenses. It is said in the Chaitanya Charitamrita, "Bhau janma kare yadi shravana kirtana tabutana paya Krishna pade premadhana." One may go on chanting the holy names birth after birth, but unless one is chanting without offenses, he will not be able to develop love of God. Very briefly, the 10 offenses that we should avoid, the main ones are as follows. To blaspheme those who have dedicated life for propagating the holy names of the Lord. This is the first offense. I'm going to describe these offenses in brief now, and I'll explain them in detail in the evening. So those who dedicate their lives to preach the mission of the Lord are very dear to the Lord. Therefore, one should not criticize them out of envy. In the material world, it is envious of B, B is envious of C. But in spiritual life, envy should not be there. If you see somebody doing nice service, you should appreciate it and aspire to also do nice service like the other person. The Rasamuni was envious of the exalted position of Amrish Maharaj, but in the end, the Rasamuni had to run from the heat of the Sudarshan Chakra of the Lord. And when the Sudarshan Chakra was right behind. And ultimately, when he came to the Lord told him that my devotees are so dear to me that I do not have the power to forgive you for the mistakes you have committed at the feet of Amrish Maharaj. The Lord told the son, my devotees reside in my heart, and I reside in their heart. They make all sacrifices for my pleasure. Therefore, I'm indebted to them. So envy should be destroyed, and we should not offend Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu said, a beautiful garden can be spoiled by a mad elephant. So all the gains of chanting the holy names of Krishna can be destroyed by this one Vaishnava aparad. Then the second offense is to consider the names of demigods to be equal to or independent of the holy name of Lord Vishnu. Fortunately, in your country, this is not a big problem. This offense is a big problem in countries like India. So people think all gods are one. There is one supreme Lord, Lord Shri Krishna, and 33 million demigods and demigoddesses. And these demigods and goddesses derive all the strength and power from Krishna. Ekala Krishna Sabhataya. Krishna is the only master and all others are his servants. Third is to disobey the instructions of the spiritual master or to consider him an ordinary person. So the spiritual master is the representative of the Supreme Lord. The spiritual master is not a Superman. Superman means like you probably read comics when you were young. The Superman jumps from one tree to another. He does magic all the time. Prabhupada said the spiritual master is just like a postman. Just like the postman brings letter to you intact, the spiritual master brings the message of Godhead. We understand the desire of the Lord when it is revealed to us through the agency of the spiritual master. Krishna speaks to us through the agency of the spiritual master. Therefore, one should not be independent of the instructions of the spiritual master. Thakur Bhaktivinoda has said that just like you cannot separate the body from the soul, a disciple cannot separate his life from the instructions of the spiritual master. What is the desire of the spiritual master? Only one, that the disciple continue to purify oneself, that one free oneself from the material tendencies, because material tendencies are responsible for keeping one entangled in material existence. And the spiritual master does not concoct the process of self-realization. He just repeats what he has heard from his spiritual master. Like nearly everything that we speak in our classes is what we have heard from Prabhupada. And almost everything that Prabhupada spoke was what he heard from his spiritual master. So this way the disciplic succession traces back to the original speaker, the Supreme Lord. Disciples should not think the spiritual master will just come and flatter me. Once I was walking with Prabhupada in Bombay in 1976 and looking at my face, Prabhupada said, my business is to find faults in you. So the spiritual master's business is not to flatter the disciple, but to correct the inability, the shortcomings of the disciple so that he can make spiritual advancement on the journey back to Godhead. The disciple should have the humility to understand that his own mind is always cheating him. Therefore, we go to the purified mind of Vyasadeva and his representative, the spiritual master, for guidance.
Why is the spiritual master respected? Because he is carrying out the orders of the Supreme Lord. He is a master about Krishna's instruction. And through his example, he is convincing others, he is convincing us to come to the pure path. So one should not expect flattery from the spiritual master, but rather one should be willing to be chastised. The instructions of the spiritual master should be taken seriously, established in the heart. One should not take the instructions from one ear and take them out from the other ear. If you undermine the instructions of the spiritual master, then your spiritual advancement will automatically become checked. Another trick that Maya plays is it makes you believe that now you're old devotee, you're old enough. You don't need instructions of the spiritual master. Sometimes we find that devotees are very humble when they're initiated. But few years after they're initiated, they act in a manner in which they don't need any instruction. This is Maya's trick. Once you become independent of the spiritual master's association and instruction, you gradually become independent of even Krishna's association and instruction. The next offense is to blaspheme the Vedic literature or to consider the Vedic literature to be compiled by some ordinary personality. The word Veda means knowledge, and Vedic literature is for entire humanity. This Vedic literature is not just for India or people of one country or people of one community. It is for entire humanity. So we must understand that the Vedas contain Sanatana Dharma, eternal religion or duty of the living entity. And the eternal duty of the living entity is to engage in service to the Lord. And the Puranas are known as the supplementary Vedas. And the Puranas also should be recognized to be the work of Vyasadeva. There are 18 Puranas, and the topmost Purana is the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Purana. So no one should really think living in the 20th century Ukraine or Russia, and this Vedic literature has no relevance today. Vedic literature is outdated, not for 20th century. It is just for the villages of India. No. This is how Maya will trick you. Slowly, slowly, you will lose faith in the scriptures, lose faith in bhakti, and increase faith in Maya. So we must always understand that Vedas contain eternal wisdom for entire humanity, which was true yesterday, is true today, and will be true tomorrow. The next is to consider the glories of the chanting Hare Krishna to be imagination or to give some own interpretation to the chanting of the holy names of the Lord. These are the fifth and sixth offenses. Kali Kali Nama Krishna Avatar. In Kali Yuga, the Lord incarnates in his holy name. So in Kali Yuga, all you need is the chanting of the Hare Krishna mantra to develop love of God. You don't need any other mantras, you don't need any other means. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Nasteva, Nasteva, Gati Amyatha. It is said, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. This is the only alternative in this age of Kali for self-realization. So this is the only alternative. We must have faith in this alternative and not try to resort to other mantras also. Just like watering the root, that nourishes the whole tree, or putting food in the stomach gives energy to the whole body. Similarly, just as chanting of Hare Krishna mantra is enough to develop love of God if we chant sincerely, following the regular principles and avoiding the offenses. Also, we should not underestimate the value of the potency of the holy name. We should not think the glories of the holy name are being exaggerated. By chanting the holy name, you can wipe away thousands of sins. But we have committed so many trillions of sins that unless we chant the holy names day and night, we will not be able to wipe away the result of all our sinful activities. Therefore, Krishna is instructing us, always chant, always chant. The spiritual master and the sadhus are reminding us, always chant. When Lord Chaitanya was cleaning the Gundicha temple, he and his followers, associates, they were always chanting the Hare Krishna mantra, and they uttered nothing but the Hare Krishna mantra, even though they were engaged in cleaning the temple. So we have to tie the holy name to the tongue. The initiation ceremony is an opportunity for the disciple to become serious and make a serious attempt to tie the holy name to the tongue. Then the next is to commit sins on the strength of chanting. By chanting the holy name of Krishna even once, countless sins are wiped away. So one should not think that now I've been chanting the Hare Krishna mantra for 2 or 3 years or 4 years or 10 years or 20 years. So all my sins have been wiped away. So now I can commit fresh sinful activities. The Lord doesn't want to be a burden on the Lord. Other people go to the temple, the church, or the mosque, and they present their shopping list to the Lord. They say, God, give me this, give me this, give me this. But what does the devotee pray? I'm a place, take my birth,
Whenever I take my bath, I may always be in the association of Vaishnavas. What the Thakur Bhakti Vinod said, my dear Lord, you may please, if you have to give me another birth, please give me another birth as a woman in the house of a Vaishnava. The eighth offense is to consider the chanting of the Hare Krishna mantra as one of the auspicious ritualistic activities that are recommended in the Vedas. The chanting of the Hare Krishna mantra should not be compared to some karma kanda activity. Karma kanda means you're ready to do some sacrifice, and in exchange you want some material benefit. So we don't chant the holy name so that I may get a ticket to America, or I may get this Mercedes car, or this material benefit, or so on. We chant the holy name because it's with the holy name of begging the Lord. Please, please, please engage me in devotional service. Hare is an address to the energy of the Lord Srimati Radharani. So when Radharani sees that you're chanting sincerely, she recommends to Krishna, yes, please give him devotional service. When we chant the names of Krishna 16 rounds attentively, we are praying to the Lord, what? My dear Lord, please engage me in devotional service. Krishna will give you all types of material opulences. Bhakti, devotional service is very rarely awarded only to the most fortunate. So those devotees who take into the Krishna conscious process are the most fortunate people on this planet. The most fortunate are not those who have a Mercedes car or a nice beer garden suit or a big bank balance in Switzerland. The most fortunate are those who have taken shelter of a bona fide spiritual master and are attempting to go back to Godhead. Material happiness is a beginning and an end, but spiritual happiness is no end. Even when the devotee leaves the body, he just continues the process of serving the Lord. And the nature of spiritual happiness is it is always increasing, bolsha, bolsha. And ninth offense is to preach the glories of the holy name to the faithless. So, on the one hand, Chaitanya Mahaprabhu said, Jayada Katahe Kaho Krishna Upadesh. Wherever you see telling about Krishna. On the other hand, we are saying, don't preach to the faithless. So some of you may be confused. You may say, how are you going to determine who is faithful, who is faithless? Obviously, when you go on the streets, it is not written on somebody's face, or no one's getting a badge. I'm faithful, so please preach to me the glories of the holy name. So that the preaches to everyone to chant Hare Krishna. Thanks everyone with folded hands. Please, please, please take to the chanting of the holy name. But the deep meaning of explained only after the person develops faith in the holy name. Just like you may meet someone in the road and he asks you, Kakwa Zavur, he'll tell you your name. But he won't tell him your secrets like where you have your money, your bank balance, or whatever in your first encounter. So tell everyone to chant. Even if they insult you, don't feel offended. Nityananda, spiritual master, the incarnation of Lord Bhava. Carrying out the order of Lord Chaitanya. He was preaching house to house in every village in Bengal. And during his preaching and lessons, he was regularly preaching to two brothers, Jagai and Madai, who were born in a political family but had become debauchees. Even when Nityananda was attacked by them, blood was coming out from his forehead. He was still with folded hands pleading with them. Please chant, please chant. So with the same humility, we have to carry out the orders of Chaitanya Mahaprabhu. So those who are studying initiation, they should also understand that they have to tangibly help in spreading Lord Chaitanya's message. Don't take initiation and then go into semi-retirement. Sometimes you see devotees work hard till they're initiated. But after they're initiated, they think they've conquered the whole world and they go into retirement. Prabhupada said, initiation is only the beginning. So now it's the beginning. It's the opportunity for you to take the opportunity of initiation seriously and show to the spiritual master and Krishna how you want to dedicate this life to the Lord's service. The last offense is to maintain material attachment in spite of chanting the holy names of the Lord. So material attachments are responsible for keeping us entangled in the material world. And as long as you maintain material attachments, you're guaranteed to stay. So we have to break our material attachment. This does not mean that you have to abandon doing your duty. Just like if somebody's in the Grihastha ashram, he may have some duties to do. But the purpose of executing all transactions should be pleasure of Guru and Krishna. Material attraction, material attachment looks beautiful only when you don't have spiritual knowledge. Just like in the presence of sunshine, darkness is destroyed and everything becomes vividly clear. Similarly, in the presence of spiritual instructions, one understands the foolishness of maintaining material attachment. Now, all those who are studying initiation
they must also understand the importance of sadhana bhakti. Sadhana bhakti means attending Mangalarati, class, Guru Puja, chanting of rounds in the morning. Those are grihastas. Then they should arrange their schedule at home in such a way that they can carry out the program. It is not that now you are grihastas, you can get up at 8 o'clock in the morning and do your Mangalarati at 9 o'clock. Then you're not grihasta, then you're grihamedi. Grihasta means one who leads a disciplined life. So those who live at home must practice the process of sadhana bhakti at home. And those who live in the ashram must take advantage of the temple schedule. Of course, some of you live in ashrams which are very far from the temple. So in that case, you may make a schedule so that in the ashram you can follow the temple schedule. So on this auspicious day, 23 candidates are taking initiation with the chanting of the holy names. So my humble request on behalf of Srila Prabhupada and the entire Parampara is please take this opportunity very, very seriously and be determined to succeed on the spiritual path. And also those who are accepting initiation, in addition to chanting, they must take a vow to also read Prabhupada books every day. You should, everyone, every devotee should try and read at least for 1 hour a day. Don't read the books when you're about to fall asleep. Read them when you're fully alert. Just like you don't fall asleep in front of prasadam, don't fall asleep while chanting and reading. And everyone should also execute service. There are many different types of service that one can engage in. But one service that Prabhupada emphasized the most was the service of book distribution. This is known as Sankirtan Yajna. So Sankirtan Yajna is the yajna for this age. So Sankirtan Yajna consists of two different aspects. One aspect is chanting the holy name and spreading the chanting of the holy name. The other to distribute the book so that people understand the importance of chanting the holy name. So even though there may be some difficulty, even in the present obstacles, we should not withdraw from this very important mission that Prabhupada has given us. Through the meaning of book through the medium of book distribution, millions of people are being saved from the cycle of birth and death. So we should dedicate ourselves to Lord Chaitanya's preaching mission and thereby become happy and peaceful. So just like a sick man needs both the medicine and the diet to recover, so we are also spiritually sick. So we need the medicine, which is the chanting of the holy name, and the diet, which is the service to recover. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. ये दुनिया भर में घूमते भटकते लाइफ एंजॉय करते हुए रिव्यू हुआ शरीर लगभग करने से आनंद केवल होती है ये बहुत ही जीवन में असंभव है कि
यहाँ पर भगवान के एक शुभ बन रही बस यहाँ अगर नहीं मेरा न्यूज फीचिंग कैसे की अरे बोलिए ना चलाइए ना तो हमें सेल्फी कलेक्शन कमजोर है तो सरल है उसको बदला जाए और उसका संसार में कोई खलक नहीं है जैसे आप जानते हो तुमने कितना वीर कैसे लैंड होता तो सुंदर मतलब वीर का तो बड़ा खाना जो हमारे बीच में तो किसान लोग जो है and so inspirational or leaders influential because they are clarity. But there are very few leaders who are really impactful
because they have both integrity in the personal character and clarity for what we want the followers to do. And I consider His Holiness Gopal Krishna such an impactful leader who has both integrity and clarity. In terms of his personal practices, I think the whole of ISKCON should look up to him as a shining example of demonstrating faith and dedication in the Panchanga Bhakti process given by Srila Rupa Goswami, whether chanting of the holy names, deep faith in Srila Prabhupada's words, sticking to Srila Prabhupada's Bhakti Vedanta purpose in his own teachings and his personal life, especially because Delhi is so close to Vrindavan, and over the years there has been always tendency of different devotees to get attracted to various kinds of philosophies which may be little different from what Srila Prabhupada has taught us. But His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has always stuck to the very, very strict line of Srila Prabhupada. Connection to the Holy Dham, establishing Sri Krishna Balaram Temple and being part of the group of this project, and other holy places, which he worshipped every single morning, being there, performing the Mangalarti, performing worship for the peace. It is something which is stunning to see, the consistency, the regularity, and it is not possible unless one has deep faith in the process of Krishna consciousness. This level of integrity is really very, very attractive. In 2003, in ISKCON Jubilee, they were celebrating this 25th anniversary festival, and I had been given seva by Brajan Prabhu to oversee prasadam distribution, and the breakfast we used to serve in the Govinda's restaurant. And Srila Prabhupada's disciples had come, and I was seeing that. And at that time, Krishna Goswami Maharaj also came. And I invited him and said, Maharaj, please, we have the host here, but still you can have prasadam here. And he said, no, I just came to meet all my God brothers. I said that we are about having honoring some prasadam. And he said that since 1971, I opened many Govinda's restaurants, never had prasadam Govinda's restaurant. As far as his clarity of vision is concerned, practically, everybody in ISKCON needs clear direction on which way to go. He has always been very clear that Srila Prabhupada his investment, his energy in the books, writing the books, spending sleepless nights. And Srila Prabhupada has said, let us distribute these books far and wide. Maharaj is the emblem of book distribution, personification of book distribution. And there was one subcommittee meeting of the Sannyas committee somewhere in South India many years ago. And some of us were going to convene physically. This was the pre-Zoom era. And as the convener of that committee, I reached out to Maharaj and said, can we have this meeting here? And it was in the month of December, beginning of December. And Maharaj, put me on the phone. How can you organize a meeting somewhere in December during the big marathon period? Don't you know that for the last 50 years, in December, I never go out of Delhi because I'm here to lead all the devotees in the book distribution efforts during the December marathon. So because of his request, then we changed the meeting dates and had it much later. So this is the kind of spirit of clarity which he has, that yes, this is what Srila Prabhupada wants, and this is the clear path we will take with respect to
Srila Prabhupada. And therefore, the last several years, we also had a lot of opportunities to improve leadership training in ISKCON, and we established the GKG College for Leadership Development. And this was established in 2015. And I'm one of the trustees of that GKG College for Leadership Development. And then last few years, we never had any idea what some of the others when we can walk in. And then we requested His Holiness Gopal Krishna Maharaj to kindly be the trustee, and he agreed. And the last several years, the maximum number of candidates he has sent for enrollment in GKG College is from Gopal Krishna Goswami Maharaj. And that was because he really felt that this is what ISKCON needs for future leaders need to be trained. On this occasion, although I did not have much of a direct working relationship with him, but I really had a very wonderful relationship as a loving uncle, and he would always shower his love and affection to me, and even to my mother. When I told him to give blessings to her, my mother was so touched by that brief interaction that even to, she tells me, when are you taking me to Delhi with all the temples which Maharaj has established in Delhi? It is such an inspirational thing for me to just see someone who can do so much in such a short duration of time. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. Maharaj Vishnu Maharaj ki jai. Nitya Pravisht Jai Vishnupad Hansa Parivrajacharya. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The large number of devotees that have assembled here from different parts of the world and who are viewing this on different social media is evidence of how dear His Holiness Gopal Krishna Maharaj was to everyone, and how he touched the hearts of millions of devotees all over the world. And actually, for the first time in my life, when I was offering my last respects to the devotee of His Holiness Gopal Krishna Maharaj, I cried and I cried. I never cried when my mother left. I never cried when my father left or any other member of the yes, but I cried. I never cried when Srila Prabhupada left, because Srila Prabhupada's ministry was coming so as Gopal Krishna Maharaj. This movement can stop, it's disturbing. Sorry, thank you. So, as I was saying, Srila Prabhupada was not accessible so easily, physically, because his life was not so good, and his secretaries made sure that he was not being disturbed so much. But His Holiness Gopal Krishna Maharaj was always available for everyone. He would meet everyone, hear everyone,
and try to solve the problems of each and every devotee. He was so personal and so caring. This realization came to me very late after Maharaj had departed. That Maharaj was my best friend, my best advisor, and my best master, all three at the same time. My best friend, my best advisor, and my best. Sorry, some disturbances. Okay, master. I forgot that word. Most important. My master at the same time, all three at the same time. And as I was saying, so many devotees have joined throughout the world. One of the criteria for the success of a movement is the number of devotees who join. And I would like to share one anecdote regarding Srila Prabhupada, when beautiful temple Prabhupada Palace of Gold was going to be inaugurated. I think everyone has heard of that. Prabhupada's Palace of Gold. So the devotees were desiring that the mission and this palace Prabhupada should be special. And from that, before the inauguration of the palace, they took the part to show all the arrangements. And they asked Srila Prabhupada, we strongly desire that your palace should be illuminated by jewels rather than with electricity and all these things, all these gadgets. Is it possible? Can we do that? And Srila Prabhupada said, which was touch everyone's hearts. All of my devotees, you are the jewels. And all of the jewel like devotees. And not only my palace, but the entire world will be jewel like devotees. And generals like His Holiness Krishna Maharaj and many others, and now the future generation of Maharaj was saying, Prabhupada said that the heavens should be even more than the future master. So this movement under the guidance, and especially the Krishna Maharaj is guiding us, and he will continue to guide us with the guidance of such channels. Krishna consciousness will become a mainstream religion of the world. Like slowly but surely, because this is the prophecy of so one approach I would like to share is that Srila Prabhupada was praised by someone. I'm skipping the details because I want to express the lesson that we get from this anecdote. Prabhupada was asked, your moment is right, everything's okay? Prabhupada responds, yes. But I do have a disease. So the picture was knows what is the disease? And Prabhupada said that my disease is that I can always say only thing, I can never think life. This is a very healthy disease. I think the Vyasapuja Maharaj also had this disease. He would always think big. Now he's dead. And I wish all of us combat this disease. We pray that we combat this disease. It's a very happy disease. We always think big, like Srila Prabhupada, like His Holiness, the politician. I like to share one more anecdote. Happened here in the garden.
Prabhupada's disciple. I have not taken this permission to mention his name, so I will not mention his name. So he approached Srila Prabhupada. Prabhupada, I think your life is very meaningful, very fruitful, very valuable. Compared to that, my life is not so perfect, insignificant. Prabhupada, if it is possible, can I donate the balance of my life to you? This is my wish. I like to donate, if it is possible, the balance of my life to you. So in response to that, you have all heard famous statement by Srila Prabhupada. Your love for me will be shown by how much you cooperate with each other when I am around you. So this is the response to Prabhupada gave. It's a very well-known statement that many of us do not know the background of why Srila Prabhupada gave this statement. He said, okay, it's good that you want to give the balance of your life to me, but your real love for me will be shown by how much you cooperate with each other when I live on with you. And His Holiness the Krishna Maharaj has always endeavored to reconcile different views, different mindsets, everything to everyone comes up with a satisfactory solution. And he is extremely expert in it because of his surrender to Srila Prabhupada. There is always taken guidance from Srila Prabhupada. He came from Golok Vrindavan and he was born back. He served Srila Prabhupada. Srila Prabhupada needed some place, and so he was gone there to serve him. He was an exceptional devotee, always surrendered with the will of Srila Prabhupada, and we should continue to follow his legacy. On this day of his disappearance, I beg for his mercy. Please always keep on inviting me, inviting all of us. I like to sing stop here, but there's many other singers out there. His honor that animated explainer videos are the best way to capture attention. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Shiva Sridhanta Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. I am grateful and honored to be among all of you to share our worship and separation
of His Holiness Srila Krishna Goswami Maharaj. His Holiness Giriraj Swami Maharaj has given us a historical description of Srila Krishna Goswami's life in Krishna consciousness. And Giriraj Maharaj has spoken with so much deep realization because he was right there in the interactions that Gopal Krishna Goswami Maharaj was having with Srila Prabhupada. And with the most important instrumental people of India and projects. As the years have passed, very sincerely, every day, my appreciation, my honor, and my deepest respect for Gopal Krishna Maharaj was continuously growing. This humility is total dedication and surrender to Srila Prabhupada and his mission. Nothing could discourage him or dissuade him. It is spoken by Sujata from Vedic literature, Vyasapuja, that to develop prema bhakti is to follow in the footsteps of great souls. Srila Gopal Krishna Maharaj, in the challenges of his health, in enormous responsibility he had taken up, and it seems that every responsibility he ever took up, he did it for life. There was no wavering. I believe he was the seniorest devotee on the GKG. He was the chairman of the bureau. He was chairman of BPT. And as far as I understand, he's built more magnificent temples. He's distributed more books. He's organized more yatras. And he and Venkateswara Swami Maharaj have both brought to this movement the maximum amount of devotees. And it's not that it was in those circumstances, even recently in his illness, he is so totally beautiful to Srila Prabhupada. He is a spiritual master very greatly. Is one has a disciple that the guru can completely depend upon. It's not conditional. Completely depend upon a disciple is only possible when there's very unconditional love, because there will be so many difficulties, so many distractions, so many temptations, so many hardships, so many crises. And Gopal Krishna Goswami Maharaj, he held on to Srila Prabhupada's lotus feet and continued with unconditional love. Thinks about what he did and how he did it in his life on this earth. It's impossible. It's just impossible. Every little thing he took up, he just accepted it as a life mission. I hope his emergent things imagining the path of perfection. We cannot do a great soul like Gopal Krishna Maharaj. I cannot even come close to his dedication and his accomplishments. But by Srila Prabhupada's mercy, I can follow in his footsteps. I can strive to do that. Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, ever since the first time I met him in the 1970s, he was so kind to me. He was so gracious. He was so encouraging. It's like one of the sparks that I was trying to develop in my service to Srila Prabhupada.
family by his encouragement and his appreciation. And that is really greatness. And it does remind me of Srila Prabhupada in the following in 26 Second Avenue. Anybody who just tried to serve his mission or connected to him in a real positive, sincere way, Srila Prabhupada encouraged them so much. And in those early days, he wasn't a skunk, but this total steadiness, total truthfulness, total surrender to unconditional loving service. He very soon became one of the most powerful preachers who performed services that are truly historical in our Gaudiya Vaishnava Parampara. And how many hundreds and thousands of devotees and people of the world. I think he developed the greatest connection to politicians, to leaders of nations, to anybody in the history of book distribution, book publication. I believe there's 17 magnificent temples in Delhi. Magnificent Srila Prabhupada back in the 70s, when there's nothing there. Srila Prabhupada, when Gopal Krishna was only there was a beautiful temple, the Jyoti Sara in Kurukshetra, and now it's about to be opened. So glorious. And when I hear about the record numbers of people coming to the Rati Electrons in Punjab, and yet, although he expanded his preaching and traveled all over the world, and I so much appreciate Giriraj Swami Maharaj, what you said about his going to Russia, and Srila Prabhupada sent him to Russia, and Srila Prabhupada was there, and he saw how difficult it was, and how restricted it was, and even how dangerous it was. Goswami Maharaj went, and look at what Russia is now. Outside of India, the former Soviet Union has the most devotees of any area in the world. And he was just right there at the grassroots, planting the seeds. And not only did he plant the seeds like that, but pastimes on this earth. He continued going regularly to Russia as a GPC and taking responsibilities and preaching. And he became GBC for Mayapur, GBC for Brindavan, and not only was a GBC who was organizing, inspiring, but and he was inspiring so many to take shelter and surrender in his footsteps. And still, while he was doing all those things, he beautifully continued to perform every responsibility he was called upon to do at Rajaras Bihari Temple in Trivandrum. He would go on to bigger and bigger and bigger and greater things, but he always remained dutiful and responsible to everything he ever accepted in Srila Prabhupada's service. And I believe that coming as His Holiness Giriraj Maharaj was describing, coming from a very cultured Hindu family from India, he first joined. He was the first Indian devotee from Indian origin who actually really surrendered to Srila Prabhupada in Montreal and in New York. And it must not have been easy for him to practice Krishna consciousness among the Western people in the 1960s in New York City and Montreal. But I never heard a negative complaint. He just had such deep love for Srila Prabhupada from the very beginning that he gave such great honor and respect to all of us who were trying to serve Srila Prabhupada. And by Krishna and Srila Prabhupada's grace, he departed from this external world. It's just this expression of he was always right there to perform his duties and responsibilities
not only to Srila Prabhupada, but to Srila Prabhupada's body, the ISKCON Society. And I feel so humbled remembering his life. I feel so humbled whenever I was in his presence. And in these emotions and in these realizations of separation from him among all of you, I am really feeling so much deeply in his presence. And every book that he inspired to be distributed, his presence is in that book. Every Awareness Srila Prabhupada, every person that comes into any of the temples that he has organized, he has built, he has managed, every person that comes in is going to be blessed by Srila Prabhupada himself. And in this way, his mercy is living on forever. And for those who follow in his footsteps, because Srila Prabhupada was, I believe, Gopal Krishna Goswami came in around 1968 or something. So Srila Prabhupada did this until 1977. And since that time, he only expanded his preaching at every level. I am eternally indebted to Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj for the service he's rendered to Srila Prabhupada and to our entire ISKCON society and to Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. And I am eternally grateful that I had the opportunity to receive his love, his kindness, and his mercy. And all of Srila Gopal Krishna Goswami religious disciples and followers will really give their life to emulating the spirit of his devotional service. Problems that ISKCON, whether he could help, he would be right there to try to create unity, to try to create confidence, to put things in the open order, so that Srila Prabhupada's teachings and Srila Prabhupada's culture and path were carefully followed. I bow my head at the lotus feet of Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj many millions of times, and to all those who take his mercy as your life and soul. Thank you very much. Hare Krishna. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. So இன்னைக்கு sound. ஸோ இன்னைக்கு நாம தவத்திரு கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜருடைய வியாச பூஜை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ மகாராஜை பற்றி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு கோயிலுக்கு போனாலும் அங்கே காலையில் மங்களார்த்தி மகாராஜ் பண்ணுவார். பெரும்பாலுமா மாயாப்பூர்ல இருந்தா பஞ்ச தத்துவா, விருந்தாவன்ல இருந்தா மித்த எந்த கோயிலில் இருந்தாலும் கௌரவனித்தாய். ஸோ ரொம்ப ரெகுலராக எப்போ எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அந்த நாள் மங்களார்த்தி அவர் அங்கே இருந்தாருன்னா எழுந்திரிச்சிருப்பார், மங்களார்த்தியில் போய் ஆரத்தி காட்டுவார். ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயம். ஒன்று, அவர் டெய்லி காலையில் மங்களார்த்திக்கு எழுந்திரிச்சு தானே ஒரு முன்னுதாரணமாக எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறார். அண்ட் பகவானுடைய நேரடியான சேவையில் அவருக்கு இருந்த ஒரு ஆர்வம். ஸோ இங்கே ஒரு தடவை நம்ம இன்னாகரேஷன் அப்போ மகாராஜை நேரடியாக தரிசனம் பார்க்குற வாய்ப்பு ரொம்ப பக்கத்தில் கிடச்சது. ஸோ டெய்டி ஒர்ஷிப்பில் இருந்த அந்த சமயத்தில் ஸோ நம்முடைய இஸ்கான் சென்னை இன்னாகரேஷன் போது மகாராஜ் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆரத்தி ஸ்ரீ கவுனிதாய்க்கு காமிச்சாங்க. ஸோ அவங்க டெய்டி ஒர்ஷிப்பில் எவ்வளவு ஆர்வம் காமிச்சாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம எல்லாரும் மேபி ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கலாம், அவர் எப்படி வந்து அவருடைய தூக்கத்தில் கூட பகவானுக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்ட்டு.
ஆரத்தி காட்டுற மாதிரி, தூபம் காட்டுற மாதிரி, சாமரம் வீசுகிற மாதிரி. ஸோ அது அவருடைய கான்சியஸ்னஸில் எவ்வளவு ஆழமாக பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது போயிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹிஸ் ஹோல்னஸ் கோபால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் கி. ஸோ இங்கே நம்மளுடைய அவருடைய சிஷ்யர் வீர் கௌர் அவங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்க 1-2 வார்த்தை பேசுவாங்க. हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाशवितराय च प्रचार कृत्वां साधु भगवत्पादाय ते नमः। सो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे श्रील प्रभुपाद says it's very difficult to understand some pastimes of Lord. I don't know, makes so श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है, कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है। சில பிரபுபாத சொல்றார் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கடினமானது. लेकिन जो शास्त्र हैं वो जब हम उनको पढ़ेंगे और जब हम उनको अच्छे से समझेंगे तो हम कृष्ण को जान सकते हैं। சாஸ்திரங்கள் நல்லா படிச்சோம்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். बट उससे ज्यादा मुश्किल है भक्तों को समझना। அதோட கடினமானது என்ன அப்படின்னா பக்தர்களை புரிஞ்சுக்கிறது. लेकिन इसमें भी जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनको जब रियलाइज करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि भक्त क्या है। நம்ம சாஸ்திரங்கள் படிச்சா பக்தர்களை உணர முடியும். सो वैसे ही जो गुरुदेव का गुणगान है वो शास्त्र करते हैं। குரு மகாராஜோடைய புகழ் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லுது. सो गुरु महाराज कोई एक व्यक्ति नहीं थे, गुरु महाराज गुण थे, क्वालिटीज थी। அவர் ஒரு நபர் இல்ல, அவர் குணங்களோட நிறைந்தப்பட்ட ஒரு நபர். सो श्रील प्रभुपाद का श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं और सब एक से एक ज्वेल्स हैं। சில பிரபுபாதுக்கு நிறைய சிஷ்யர்கள் இருக்காங்க. ஆனா எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒரு சிஷ்யரும் வந்து ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் கூட கனெக்டடா இருக்காங்க. सो सब श्रील प्रभुपाद की कृपा मूर्ति हैं। எல்லாருமே பிரபுபாதுடைய கருணை வாய்ந்த மூர்த்தி. बट गुरुदेव का विशेष इसलिए कि जितने भी उनके जो भक्त हैं, जो उनके श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उन सबको बहुत ज्यादा प्रिय थे श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ஸோ குரு மகாராஜோடைய விசேஷமான குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா எல்லா சிஷ்யர்களும் குரு மகாராஜை வந்து லைக் பண்ணாங்க. सो हम शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन पढ़ते हैं, लेकिन जो प्योर डिवोटीज हैं, है ना, और उनके लिए जो मतलब हम बहुत से जैसे प्रहलाद महाराज को देखते हैं भगवान के लिए समर्पित हैं, ध्रुव महाराज भगवान के लिए समर्पित हैं, सो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और बहुत सारे हम देखते हैं डिवोटीज जो भगवान को सरेंडर हैं, बट भगवान के भक्तों को कोई इतना सरेंडर है, सो ये हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में गुरु महाराज को। நம்ம நிறைய தூய பக்தர்களை பார்க்குறோம். பிரஹ்லாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ் பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா நேரடியான கண்ணுக்கு எதிரில் பார்க்கக்கூடியது நம்ம வந்து குரு மகாராஜ் இடத்துல பார்க்கலாம்.
सो जिस दिन से वो शिला प्रभुपाद से मिले और एंड तक, जब तक उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो एक एक सांस जो उनकी थी वो गुरुदेव के लिए थी, अपने शिला प्रभुपाद के लिए थी. மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதரை சந்திச்சார் ஆரம்பத்துல, கடைசி வரைக்கும் அவருடைய எல்லா மூச்சையும் வந்து பிரபுபாதருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணார். सो पूरा दिन का हम शेड्यूल भी देखते हैं गुरु महाराज का, कहीं भी रहते हैं गुरु महाराज, तो सारी चीजें उनकी वो आपको मिलेंगी. सिर्फ वो किस लिए करते थे? शिला प्रभुपाद के लिए. ஸோ குரு மகாராஜுடைய நாள் முழுக்க ஷெட்யூல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, எல்லாத்தையும் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, அது எல்லாமே வந்து பிரபுபாதருக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணார். सो शिला प्रभुपाद मीन्स उनके जो इंस्ट्रक्शन थे, जो उन्होंने चीजें दे रखी थी, जो मॉर्निंग प्रोग्राम देख रखा था, जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक की जो एक एक चीज बताई थी, गुरु महाराज उनको पूरे भाव से पूरा एब्जॉर्ब होकर करते थे. ஸோ சில பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய பிரபுபாதருடைய மார்னிங் ப்ரோக்ராம் இப்படி குரு மகாராஜ் வந்து காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் முழுமையாக அந்த ஷெட்யூல்ல வந்து அப்சார்ப்டா இருந்தார். सो मैं जब दिल्ली में था तो मैं गुरु महाराज के पास था. सो मैंने कभी नहीं देखा गुरु महाराज को कुछ कुछ भी ऐसा बोलते हुए. गुरु महाराज जब भी बोलते थे, किसी को कुछ भी बोलते थे, कोई क्वेश्चन भी होता था, तो मोस्टली वो ज्यादा से ज्यादा दो चीजें बोलते थे. ஸோ நான் வந்து நேரடியாக குரு மகாராஜோட தொடர்பில் இருக்கும்போது தில்லியில், ஸோ அப்போ दो चीजें बोलते थे. ரெண்டு விஷயங்கள் அவர் வந்து எப்பவுமே சொல்லுவார். सो पहला होता था कि ध्यान पूर्वक जप, முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கவனமாக ஜபம் பண்றது. और दूसरा होता था शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए. ரெண்டாவது சில பிரபுபாதோடைய புத்தகங்கள் படிக்கிறது. सो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी महाराज के पास. महाराज जीबीसी थे, बट महाराज के ज्यादातर जो रिलेटेड होते थे वो हमेशा बोलते थे कि शिला प्रभुपाद ने ये बोला है और आप ये करिए. बहुत सारे क्वेश्चन होते थे बड़े बड़े, और बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती थी. सो लेकिन आंसर जो होते थे वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होते थे कि आप ये दो चीजें करिए और शिला प्रभुपाद ये बोलते हैं. ஸோ நிறைய விதமான பிரச்சனைகள், நிறைய விதமான கேள்விகள் குரு மகாராஜ் இடத்துல கேட்கும்போது, குரு மகாராஜ் வந்து எப்பவுமே இந்த ரெண்டு பதில் சம்பந்தமாக தான் வந்து அவங்களுக்கு பதிலே கொடுப்பார். सो जैसे प्रार्थना आती है मंगलाचरण में, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सो इसमें वर्ड आता है तिमिरांधस्य. ஸோ மங்களாச்சாரத்தில் நம்ம வந்து இந்த பிரார்த்தனையை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அதில் வந்து திமிராந்தஸ்ய அப்படிங்கிறது வார்த்தை வருது. सो वैष्णव समाज में हम कहते सुनते हैं लोगों को कि मैं बहुत पतित हूँ, मेरे गुरु महाराज ने मेरा उद्धार कर दिया और मेरे गुरु महाराज की मर्जी से मैं इतना कुछ कर गया. बट मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जो देखा वो ये है कि मैं बाहर जब था, सो आप ट्रांसलेट करो. ஸோ நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம். வைஷ்ணவர்கள் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் ரொம்ப பெரிய பாவி, என்னோட குரு வந்து என்னைய வந்து காப்பாத்திட்டாரு அப்படிங்கிறது. ஸோ நான் வெளியில இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி அந்த கருணை கிடைச்சது? सो वे विनम्रता पूर्वक ये बोलते हैं चीजें. बट मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये देखा कि एक टाइम ऐसा आया था कि सारे रास्ते बंद थे, हर तरफ अंधेरा था नेगेटिविटी का. ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு காலம் வந்தது, என்ன ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்படின்னாக்கா, எல்லா கதவு வந்து எனக்கு வந்து சாத்திட்டாங்க. நாலு பக்கம் சுத்தி வந்து நெகட்டிவிட்டியா தான் இருந்தது. सो बहुत सारी चीजें ट्राई कर रखी थी मैंने, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था. और मैं सोचता था कि ये कर कर भी क्या मिलेगा मुझे, और बड़ी बड़ी चीजें भी सोची और भगवान की कृपा से वो भी मिल रही थी. लेकिन मैं ये सोचता था कि इससे होगा क्या, एंड ऑफ द डे क्या कर रहा हूँ मैं एक चीज में जीवन दे रहा हूँ, लेकिन इसका महत्व क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, तो बहुत सारे लोग करके बैठे हुए हैं. ஸோ பல விஷயங்கள் எனக்கு வந்து கிடைச்சது, பல விஷயங்கள் நான் சாதிச்சேன். ஆனா கடைசியா நான் யோசிப்பேன், எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது இதுல? सो बहुत सारे लोग से मिले, बहुत सारे लोगों को जानता भी था, बट कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखता था कि जो इस तरह का हो कि उसमें जीवन दिया जाए अपना और वो मीनिंगफुल हो कुछ. ஸோ நிறைய நபர்கள் இடத்துல சந்திச்சேன். எங்கேயுமே வந்து எனக்கு தோணல இந்த விஷயத்துக்காக நான் என்னோட வாழ்க்கையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத, எனக்கு அது தோணவே இல்லை.
सो वहां से पूरा नेगेटिविटी था, कुछ डार्कनेस थी, कुछ समझ नहीं आता था क्या लाइफ है, कुछ नहीं। सो बाहर के लोग जैसा हो गया था कि खाओ और पियो और जियो। ஸோ என்ன செய்யறது வாழ்க்கையில எந்த விதமான ஒரு சிந்தனையும் கிடையாது. வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா, சாப்பிடுங்க, நல்லா ஆரோக்கியமா இருங்க, ஜாலியா இருங்க. बट सम ऑफ द मर्सी ऑफ गुरु महाराज, लखनऊ में कुछ ऐसे भक्त मिले जिनकी वजह से मैं जान पाया कृष्ण कॉन्शियसनेस को। ஸோ குரு மகாராஜோடைய கருணையினால லக்னோவில் எனக்கு பக்தரை நான் சந்தித்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி கிடைச்சது. सो मुझे जहाँ तक याद है पूरा कि मैं जब गुरु महाराज को पहली बार मायापुर में मिला, सो मैं जानता भी नहीं था कि महाराज क्या होते हैं। நான் முதல் முறையாக மாயப்பூர்ல குரு மகாராஜை சந்திச்சேன். எனக்கு குரு மகாராஜ்னா யாருன்னே தெரியல. बट और मैंने महाराज के कोई लेक्चर भी नहीं सुने, इनिशिएशन से पहले भी बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं सुने। நான் மகாராஜோடைய உபன்யாசங்கள் கூட நிறைய கேட்கல தீட்சைக்கு முன்னாடி. बट जब महाराज को मैंने देखा प्रैक्टिकली, 6 महीने जब महाराज के साथ मैं रहा तो वहां महाराज को देखता था, महाराज की एक्टिविटीज। நான் 6 மாசத்துக்கு மகாராஜ் கூட இருந்தேன். மகாராஜோடைய செயல்கள் நான் வந்து நல்லா பார்த்தேன். और महाराज वही बोलते थे जो शिला प्रभुपाद की बुक्स में था। மகாராஜ் வந்து சில பிரபுபாதர் என்ன பேசுவாரோ அதே தான் அவரும் வந்து பேசுவார். और जो उनके डिसाइपल्स हैं, महाराज के जो डिसाइपल्स है, वो भी जो जो महाराज के फेवरेट डिसाइपल्स थे और जो महाराज को फॉलो कर रहे थे, उन डिसाइपल्स को देखा मैंने। நான் வந்து குரு மகாராஜோடைய சிஷ்யர்களையும் பார்த்தேன். ஆஹ் महाराज के जो डिसाइपल्स है उनके जो आचरण को देखा। ஸோ நான் என்னுடைய குரு மகாராஜோடைய சிஷ்யர்கள் அவங்களுடைய செயல்களையும் நான் வந்து பார்த்தேன். सो जब ये चीजें देखी मैंने, और उसके बाद जब कुछ वरिष्ठ वैष्णव थे, இது பார்த்த பிறகு இன்னும் சில மூத்த வைஷ்ணவர்கள் இருந்தாங்க. और जब उनको सुना तब कुछ कुछ चीजें तब मुझे समझ में आया कि गुरु महाराज कितने विशेष हैं। அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னாக்கா, குரு மகாராஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு விசேஷமான நபரா இருக்கிறார். सो आज प्रैक्टिकल लाइफ में मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज ने सच में वो जो तिमरान धस्य मतलब तिमरान मतलब होता है अंधकार, तो उस अंधकार से निकाल के एक होप दी है कि हाँ लाइफ ये है। ஸோ இன்னைக்கு நான் உணர்றேன் என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த திமிராந்தசிய வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இருட்டில் இருக்கிறவனுக்கு வந்து அங்கிருந்து காப்பாத்தி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருது. सो मैं यही बताना चाहता था कि गुरु महाराज को उनका गुणगान करने के लिए बहुत रियलाइज पर्सन होना चाहिए, और जो शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, शास्त्रों को अंडरस्टैंड करता है, वो गुरु महाराज का गुणगान कर सकता है। ஸோ குரு மகாராஜை வந்து புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னாக்கா, சாஸ்திரங்களுடைய ரொம்ப டீப்பான ஒரு புரிதல் இருக்கணும். அவங்களால மட்டும் தான் வந்து குரு மகாராஜுடைய புகழ் வந்து பேச முடியும். सो लास्ट 3 मंथ से महाराज का गुणगान कंटिन्यू है, और अनेक भक्त कर रहे हैं, अनेक मंदिरों में कर रहे हैं। ஸோ கடைசி 3 மாசத்துல வந்து குரு மகாராஜுடைய புகழ் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பல விதமான பக்தர்கள் பல விதமான கோயில்கள்ல. बट अभी भी वो कंटिन्यू है। அது இன்னும் வந்து புகழ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு. सो जैसे एक वैष्णव सॉन्ग है, सो उसमें मर्सी मांगते हैं कि हरी हरी कबे होबे कबे हबे कबे मोरा होबे से ही दिन। ஸோ வைஷ்ணவ பாடல் ஒன்று இருக்கு. இந்த பாடல்கள்ல ஒரு வைஷ்ணவோட கருணை பத்தி இங்க பேசப்படுது. सो उसमें कहते हैं विमल वैष्णव रति उपाजीवे, विमल वैष्णव रति उपाजीवे, விமல வைஷ்ணவ ரதி उपाजीवे, உப்- उपाजीवे। உபாஜிவே हाँ, वासना है बे क्षीण, வாசனா ஹைவே क्षीण। சீன. सो उसमें मांगते हैं कि कब मेरा जो विमल वैष्णव है उनके चरणों में रति होगी। யார் அந்த விமல் வைஷ்ணவரோ எப்போ எனக்கு வந்து அவங்களுடைய பாதங்கள் மேல எனக்கு ரதி கிடைக்கும். सो गुरु महाराज सिर्फ भगवान को ही प्रिय नहीं है, और इतने सारे जो भक्त हैं जो उनके गुरु भाई हैं उनको भी प्रिय हैं। குரு மகாராஜ் வந்து பகவானுக்கு மட்டும் ரொம்ப பிரியமானவர் கிடையாது, सो பல விதமான வைஷ்ணவர்களுக்கும் பிரியமானவர். मेरा जीवन सार्थक होगा और अगर मैं उनके चरणों में रति कर पाऊं। என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து பக்குவம் அடையும் நான் எப்போ அவருடைய பாதங்கள்ல நான் எனக்கு ரத்தி ஏற்படுதோ. गुरु महाराज ने जो भक्त दिए हैं मुझे, उनकी कृपा से जो भक्त मिले हैं, उनके चरणों में रति हो पाए मेरी।
குரு மகாராஜ் வந்து பலவிதமான மூத்த பக்தர்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய பாதங்கள் மேலே இரத்தி எனக்கு எப்போ கிடைக்குமோ. सो एक पास टाइम मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा. सो गुरु महाराज का एक चीज है कि गुरु महाराज शिला प्रभुपाद से जितना प्रेम करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन से जितना प्रेम करते हैं, उतना ही जो इस्कॉन है, जो उनकी संस्था है, उसको भी उतना ही प्रेम करते हैं. ஸோ ஒரு லீலையை நான் வந்து சொல்லி முடிக்கிறேன். குரு மகாராஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு பிரபுபாதருடைய கட்டளைகள் மேல அன்பு வச்சிருந்தாரோ அதே அன்பு இஸ்கான் மேலேயும் அவருடைய பக்தர்கள் மேலேயும் வச்சிருந்தார். और इस्कॉन मीन्स जो उसके डिवोटीज हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो है इस्कॉन. இஸ்கான் அப்படின்னாக்கா யார் இஸ்கானுடைய பக்தர்கள் இஸ்கானை வந்து பின்பற்றுறாங்களோ அவங்க. गुरु महाराज अपने इंस्ट्रक्शन में भी बोले हैं, जो 10 इंस्ट्रक्शन दिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. குரு மகாராஜ் வந்து 10 கட்டளைகள் கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பிராக்டிக்கலான கைடன்ஸும் கொடுத்திருக்கிறார். सो गुरु महाराज का ऐसा था कि गुरु महाराज कभी किसी का ऑफेंस लेते नहीं थे. குரு மகாராஜ் வந்து யாருடையும் அபராதம் வந்து என்னைக்குமே எடுத்தது கிடையாது. बट कभी उनको गुस्सा नहीं आता था, कभी इस चीज को लेकर, कभी कोई कितना भी ऑफेंस करके आया, कितने भी बड़े ऑफेंस करके आता है व्यक्ति. गुरु महाराज की एक शिष्या भी आई, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज मैंने आपके लिए बहुत सारे ऑफेंस किए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए. ஸோ குரு மகாராஜ் என்னைக்குமே அபராதங்கள் எடுத்தது கிடையாது. ஆனா ஒரு டைம்ல அவர் கோபமும் பட்டது கிடையாது. ஒரு முறை ஒரு சிஷ்யர் வந்து குரு மகாராஜ் இடத்துல சொல்றார், குரு மகாராஜ் நான் உங்கள் இடத்துல பலவிதமான அபராதங்கள் செஞ்சு விட்டேன். गुरु महाराज के पास बहुत सारे लोग नियम तोड़ कर जाते थे और रोते थे, महाराज क्षमा कर देते थे उन्हें. ஸோ இன்னும் சில சிஷ்யர்கள் விதிமுறைகள்லாம் கடைபிடிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து குரு மகாராஜ் இடத்துல போய் மன்னிப்பு கேட்பாங்க. குரு மகாராஜ் வந்து அவங்களையும் மன்னிச்சிருவார். बट अगर कोई वैष्णव अपराध करके गया है महाराज के पास या महाराज के सामने आया है, सो महाराज स्कैन कर लेते थे उसको, महाराज उसको कभी क्षमा नहीं करते थे. ஆனா யாராவது ஒருத்தவங்க வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது மட்டும் அவர் வந்து என்னைக்குமே அவர் வந்து மன்னிக்க மாட்டார். सो महाराज इवन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक बहुत प्रिय भगवान भक्त हैं, गुरु महाराज के बहुत वरिष्ठ डिसाइपल हैं, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. ஸோ ஒரு முறை குரு மகாராஜோடைய ஒரு பெரிய மூத்த சிஷ்யர், அவர் வந்து மகாராஜ் ரொம்ப பிரியமானவர். அவர் ஒரு தடவை புத்தக விநியோகம் பண்ணிட்டு இருந்தார். बट उन्होंने एक बार एक वरिष्ठ वैष्णव से कुछ ऐसी बातचीत में कुछ उनसे तेज आवाज में बात करी. सो गुरु महाराज ने वो देखा. ஸோ ஒரு முறை அவர் அந்த பக்தர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூத்த பக்தர் இடத்துல கொஞ்சம் பேசும்போது டோனை வந்து சத்தமா பேசிட்டார். அது வந்து குரு மகாராஜ் பார்த்துட்டார். गुरु महाराज ने 1 साल तक की उनकी शक्ल तक नहीं देखी. குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அவருடைய மூஞ்சி கூட அந்த சிஷ்யரோட மூஞ்சி கூட பார்க்கல. और जबकि वो भक्त बताते हैं कि वो जब गुरु महाराज कीर्तन होता है तो बहुत नाचते हैं, और गुरु महाराज को बहुत प्रिय भी हैं. और गुरु महाराज जब मंगला आरती में आते थे, सो जब वो डिवोटीज की तरफ अगरबत्ती या फिर लैंप करते थे तो सबको देख लेते थे, और उसके बाद में बताते थे कि ये मंगला आरती में प्रेजेंट थे और ये एब्सेंट थे. ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து அந்த சிஷ்யருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் தான். ஸோ அவர் பொதுவாக மங்களாரத்தி பண்ணார் அப்படின்னாக்கா இப்படி ஊதுவத்தி பகவான் காப்பிட்டு இப்படி திரும்பினார் அப்படின்னாக்கா யார் யார் எந்தெந்த சிஷ்யர்கள் மங்களாரத்திக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அப்புறமா வந்து ஈஸியாக சொல்லிடுவார். बट गुरु महाराज उनको इग्नोर करते रहे 1 साल तक. ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த சிஷ்யர் இடத்துல மட்டும் இக்னோர் பண்ணிட்டே இருந்தார். और जब गुरु महाराज ने देखा कि उन भक्त के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, हंसते हुए देखा एक बार, उस दिन के बाद से उनसे बात की. वो भक्त से जब बॉन्डिंग अच्छा हो गया, जब गुरु महाराज ने ये देखा, तो गुरु महाराज ने उनसे बात की. ஸோ அந்த சிஷ்யர் அபராதம் பண்ணார் இல்லையா, அப்போ எப்போ அவங்க 2 பேரும் நல்லா க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்களோ, நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்களோ, அது குரு மகாராஜ் பார்க்கும்போது அப்போ வந்து குரு மகாராஜ் வந்து நார்மல் ஆயிட்டார் அந்த சிஷ்யர் இடத்துல. सो गुरु महाराज से कोई कभी भी मिल सकता था, और कोई भी गुरु महाराज की मर्जी को प्राप्त कर सकता है, बिकॉज वो पूरे इस्कॉन के लिए समर्पित हैं. ஸோ குரு மகாராஜ் இடத்துல யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் சந்திக்கலாம்.
हाँ, सरेंडर है पूरे। हाँ, पूरे इस्कॉन को समर्पित है। அவர் இஸ்கானுக்கு வந்து முழுமையாக சமர்ப்பணமா இருந்தார். और गुरु महाराज का प्रेम सबके लिए था, किसी का भी डिसाइपल हो, कोई एक नया भक्त भी आता था मंदिर में, उसके लिए भी वैसा ही प्रेम था जैसे अपने डिसाइपल्स के लिए। ஸோ அவர் எல்லார் இடத்துலயும் பாசம் வச்சிருந்தார். அவருடைய சிஷ்யர்கள் மட்டும் இல்ல, வேற ஒரு காட் பதருடைய சிஷ்யராக இருந்தா கூட அவர் இடத்துல கூட வந்து பாசம் வச்சிருந்தார். बस दो लोगों के लिए नहीं है, जो एक इस्कॉन का अपराधी है और दूसरा वैष्णव अपराधी है। ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் கருணை கிடையாது. ஒன்னு யார் இஸ்கான் பத்தி அபராதம் பண்றாங்களோ, இன்னொன்னு வைஷ்ணவர்களுக்கு பத்தி அபராதம் பண்றாங்களோ. सो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑफेंस करता हूँ वैष्णव के लिए, सो गुरु महाराज मुझ पर कृपा करें, आप सब आशीर्वाद दें मुझे। ஸோ நான் நிறைய பக்தர்கள் இடத்துல அபராதம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ குரு மகாராஜ் இடத்துல இன்னைக்கு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சு விடுங்கோ. बाकी आप सबको अगर गुरु महाराज का चरित्र जानना है, उनका गुणगान जानना है, तो अच्छे से शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ें। ஸோ நீங்க குரு மகாராஜோடைய இன்னும் புகழ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரங்கள் நல்லா படிங்க, இன்னொரு ஆழமாக சாஸ்திரங்கள் படிங்க. देन आप जान पाएंगे गुरु महाराज की मर्सी क्या है और गुरु महाराज क्या है। அப்போ நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன அப்படின்னாக்கா குரு மகாராஜ் எப்படிப்பட்டவர், அவருடைய கருணை எப்படிப்பட்டவர். हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. His Holiness கோபால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் கி. ஸோ இப்போ ஆர்த்தி இருக்கும், ஆர்த்தி புஷ்பாஞ்சலி. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಧಲೋಕ ಕಾನಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣತ್ವಂ ಸಂಸಾರ प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं प्राप्तस्य महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यान मनसोर सेना रोमांचकंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो श्री नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तं स नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वाद्वं नात्रे हरि भक्त संगा
भगवत्प्रसादो कृत्वैवात्रे ते भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दा श्रीराधिका माधवयो अपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधवयो अपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिशन स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसेध्ये यायालिभिर्युक्तिरापेक्षणीया तत्र त्रिदाक्ष्यादातिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादा ध्यायन्तु वांस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् ॐ विष्णुपदाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमः
Hare Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Desatarine Gauravani Pracharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Javanshpad Paramahamsa Parajagachara Stotra Shata Shri Srimad Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ki Javanshpad Paramahamsa Parajagachara Stotra Shata Shri Srimad Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की मायपुर नदी धाम की गंगा माई की यमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की सवेत भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki.
His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Vyasapuja महोत्सव की से पहला आपको महाप्रसाद